40 years back in November 1984, 4,006 were killed in Delhi, the capital of India. The genocide continued unabated for 3 days. Every minute, one Sikh was killed on the streets of Delhi. After the genocide, the guilty were given high positions and they were given the position of power. For 40 years, the victims are still waiting for justice. The cases for the justice to the victims are still continuing even now. I, H.S. Phoolka, a senior advocate, has been handling these cases right from number 1984 onwards. Through this video series, we have made an effort to bring to you how this massacre was planned. It's an effort to take you through the whole entire journey of this 14 years. Welcome to today's episode. My name is Neetika Khaitan and I am a lawyer pursuing a PhD in history at Yale University in the US. I'm joined today by senior advocate H.S. Phoolka, who has worked on cases related to the 1984 anti-Sikh pogrom since the very beginning. Thank you so much, Phoolka sir, for joining us. In a previous episode, we had discussed how most of the cases against former Congress Minister HKL Bhagat, accusing him of perpetrating and leading much of the violence, had been closed by the police. How is it then that on 15th January 1996, HKL Bhagat came to be named again and non-bailable warrants issued against him? You see, the police had closed all the cases. What this was orders from the court. There's one section 319 under that because the victim had named HKL Bhagat in the court. So what happened? As I mentioned to you earlier, one judge, S.S. Pal, judicial session judge, he was brought specially. All these cases was assigned to him, and his job was to finish all the cases, and that is almost he did it. What this one case pertaining to Talokpuri, he could not finish. The reason was because there were 100 accused, over 100 accused, and all those accused were not present on any one day, so the case could not proceed. So then SS Bal got transferred, and Shivendran Dhingra, SN Dhingra, additional session judge, he came in place of SS Bal. Now, Dhingra was right opposite to SS Bal. Dhingra wanted to give justice, and after that, most of the judgment of conviction in these 84 cases are by Dhingra. Now, what happened when he came and he realized that this particular FIR 426, this pertained to the Talokpuri area, where almost 406 were killed, but there was only one FIR 426, which were registered on 3rd November, and all the complaints of murder on 1st November, 2nd November, 3rd November, they were tagged with that. The police itself mentioned in the charge sheet that 292 murders, their complaints were tagged with that FIR. So this is totally a wrong procedure. Every committee and commission had criticized it. Dhingra did the right thing. He directed the police to split these challans because they are at different time, different place, and the mob is also different mobs. Different people accused are named by the witnesses. Police splitted these challans, and the police filed 50 different cases then from that one case. 50 different cases of different incidents at different places, they were filed in the court, and in one of those, when on 15th of January, the witness appeared before the court. The witness Satnami Bhai,
She was a victim. Her family members were killed. Rami Bai told the court that HKL Bhagat was leading that mob. He was there. He, it, the mob acted on the instructions of HKL Bhagat. Now, the same day, Tingra issued non-royal warrants of HKL Bhagat for 25th of January and directed the police to arrest Bhagat and produce on 25th January. So that time this was a Congress government at center. Police was under the Congress government. Narasimha Rao was the prime minister. So there was a whole lot of hue and cry that how come a person of the Bhagat stature, he will be arrested. So Bhagat filed challenged this order in the High Court. Intentionally, he challenged it very late. He filed this petition in the High Court on 22nd January, thinking that only 2 days are left. The judge, High Court judge, will not be able to decide it. So automatically there will be a stay of arms. Unfortunately for him and fortunately for us, this matter came up before Justice Jaspal Singh. Justice Jaspal Singh, first thing in the morning on 23rd, on 22nd, when the matter came up, he said, you have leveled allegations against the judge. Are you prepared to delete? He asked Bhagat's lawyer. R.K. Nand was a senior advocate, was appearing for Bhagat. He asked him, are you prepared to delete these allegations against the judge? Or otherwise, we prepared to face the contempt. Immediately, R.K. Nand realized that the judge will obviously issue the contempt. It was a contempt, leveling the allegations against the judge. So R.K. Nand said, we will delete it. He said, first delete it and come after 1 hour. So the matter was taken up at after lunch, after they deleted and filed the revised petition. When the matter started after lunch, Justice Jaspal Singh was so prepared. R.K. Nand will cite a judgment. Before he read the judgment in his favor, Justice Jaspal Singh will tell him, read para 20. And para 20 will be against him. Whichever judgment R.K. Nand cited, the judge tells him, come to this para. And that para is against him. So this is how the argument concluded. The same day, on 23rd morning, Justice Jaspal Singh gave the judgment and dismissed the petition. And he writes such a wonderful judgment that judgment, HKL Bhagat, after this strong judgment, he could not dare to go to Supreme Court. But later on, in another matter, where Narasimha Rao was summoned, in a later case, this very judgment was relied upon, and this judgment was taken to the Supreme Court, and Supreme Court affirmed this judgment of Jaspal Singh. So now this happened on 23rd. Now comes the D-Day. 25th January 1996, he was to be produced by the police in Karkarnuma Court. So what in Karkarnuma Court, it was like a police camp. There was so much of police force present there. And there was the sea of crowd. Over 10,000 people were there. Almost all the entries of the court complex were blocked. All countries. So I went there with two of my lawyer colleagues and two volunteers. So we were not allowed to enter. Ultimately, the police guided us to go from the judge's entry side. So we went from the judge's entry, parked our car on the backside and went to the courtroom. So when Bhagat reaches there, he comes with 100 lawyers. 100 lawyers were with him, led by the president of the chairman of the Bar Council of Delhi. So the judge was not in the court at that time. We all were waiting for the judge. When the judge, Justice Tigra, entered the courtroom, HKL Bhagat stood on the chair. He stood on the chair and tells Tingra, Namaskar, which I didn't respond, because when judge comes, he say everybody once bows it. After that, he is not supposed to. He again said, Namaskar. He was trying to provoke the judge. The judge didn't respond. Third time he said, oh, Namaskar to le lo.
The judge said, don't throw namaskar at me like you are throwing a stone. And he tell Arkanan, please tell your client to behave. Moment judge said it, all the lawyers, they burst upon the judge. They started making noise. So when the things were going out of hand, immediately I shouted that this is their game plan to get the case transferred. They want to create a ruckus. This is totally contempt of court what they are doing. They want the case to be transferred. That is the reason these lawyers are making so much noise. Moment I shouted it, there was pin drop silence. And Judge Tingra also realized, yes, this is what they want. So after that, the arguments started. Arkanand argued for uh, Bhagat and I argued for the victims. After the arguments, the judge get up, go to the chamber to pronounce the judge, write the order and pronounce the order. In the meantime, Bhagat started creating a drama. There's a pain in my chest. So he knew it that he will be sent to jail. He wanted to avoid going to jail. So he created this drama. In the meantime, two lawyers came from the Bhagat camp and say, we know judge is going to dismiss his bail. He will send him to jail. And you please go out immediately now. Otherwise, the mob will lynch you. They will not leave you. After that, the reader of the judge was also there. He said, sir, आप इधर से आइए, मैं आपको निकालता हूँ. So before even the order was pronounced, the reader fixed us from the chamber of the judge, and we go to the car. And in the meantime, the order was pronounced. When the order was pronounced, there was hue and cry of so much of slogans in the court. We could hear it. The people, I immediately, when we rushed to the car, we speeded our car. The people were trying to stop us, but we were able to get out of there. And after Bhagat created a drama. So the Bhagat, instead of taking him to jail, he was taken to the hospital. Next day, the matter came up. The judge asked the hospital to send the reports to the judge, Judge Tingra. Hospital doctors got scared. They immediately discharged HKL Bhagat and sent the report that they have discharged him. So Bhagat goes to jail. In the jail, he just spent a night, and again he created a drama that he is not well. And again, next day, again he was shifted to hospital. So this was going on 2-3 days. Hospital, jail, this was. Then Judge Tingra, he grants the bail to Bhagat, and in that he writes that because of this tactics by Bhagat, he is not allowing the case to proceed further. So it is better. So the case should proceed. It is better that he should be released on bail. So he releases Bhagat on bail, and then the case proceeds. Then in the month of July, another victim, Darshan Kaur, he also named Bhagat. So the judge Tingra summoned Bhagat also in that, but he grants him bail in that. I was mostly handling the cases in the High Court or before the commissions. In the lower court, the cases were being held by other people, by the lawyers who were mostly in the lower courts. So for this case of HKL Bhagat case, there was a very experienced criminal lawyer working with us from Mishra Commission days, Mr. Botalia. So we assigned the case to him. So he was appearing, and I told them that whenever there is an important hearing, please tell me, I'll also come. He was very senior, he was much senior to me. So I say, I'll also come to help you. And then in the meantime, there was a member of Gurdwara Committee, Atma Singh Labana. He was also from the same community, the Tarlokpuri area where the Satrami Bai and Darshan Kaur belonged. They were also Labana Sikhs. He was from the same community. He had been working with the victims since quite some time. Because of that,
we had recommended that he should be given the ticket of Delhi Gurdwara Management Committee. Now, the Delhi Gurdwara Management Committee elections are also held like assembly elections. So he was given the ticket and he won. That time he was the member of Delhi Gurdwara Management Committee. So he was assigned the job of looking after these victims. Now these victims had to be brought to court. Their security has to be taken care of. Then they have to be taken back. So this all Gurdwara committee gave him a car and also gave him 2, 3 persons who can go with him and to help him. He was doing this. Satrami Bai's next appearance. There were many appearances in the meantime, giving document to the accused, Bhagat and others. Satrami Bai's appearance in the court on 12th November 1996. On 12th November 96 appearance, neither Battaglia told me nor Labana told me about that. I was not in the court. I was in the High Court when in the afternoon the news came that Satrami Bai has backtracked from her statement. In the court, he said, I have not seen Bhagat. Totally backtracked from the statement. So it was a big shock for everybody. Everyone, it was a big shock. I was trying to contact Lavana, what has happened? He was not in touch. And so we were also surprised what is happening. And next day, in the meantime, all these rat victims, they came to know that this has been done by Atma Singh Lavana. So these rat victims and their some other leaders, they came and told me that Atma Singh Lavana is sold out. He has taken money from Bhagat, and it is because of that Satrami Bai has changed the statement. So the next day, I got a call from Justin Rula. Justin Rula was our member of the Citizen Justice Committee also. Justin Rula said that Satnami Bai wants to come, and she says she had done a mistake by backtracking, because the reason is that these in the right victims, when they learned this has happened, they attacked Lavana's house. They totally damaged and destroyed Lavana's house because they say he is the one who has done it. Satnami Bai was also targeted. So because of the reason that her own people turned against her, she wanted to change her statement. So I told Justice Nurullah that you please send her to me. This was the third day, 12th November, 13, 14. 14th November, Satnami Bai comes to my office, and along with Sir Harpajan Singh Nishkam. Sardar Harpajan Singh Nishkam was is a volunteer. He runs at Nishkam Sikh Welfare Council there. They work for the rat victims, for rehabilitation of the rat victims. Along with him, she comes to my office, and in the meantime, I called a photographer also. I said, please record this statement. I don't want her to come tomorrow name me that I have told her to make a wrong statement. And she told me everything, that Atma Singh Lavana took me to a meeting with a person, and that person says, "Aapko Rani bana denge, we'll make you queen, you will live like a queen. If you give a statement against her, then we will target your children." So she said, Atma Singh Lavana then forced me to change my statement. I have changed that statement. I say, okay, we are preparing the application to the court, and you come next day. Next day she didn't come. She didn't turn up because again these people again they come to know that she is giving a statement against Bhagat. They again controlled her. Now after that, Darshan Kaur, she stood by her statement. Darshan Kaur, when Darshan Kaur turn came, she named Bhagat. She said, "I've seen him. He was there. He was there instructing the mob to kill the Sikhs." Atma Singh Labana, and there's one more person along with him, Jasveer Singh. They were forcing Darshan Kaur also to change the statement. Darshan Kaur didn't agree. They even had beaten Darshan Kaur very badly.
That case of beating up Darshan Kaur, that was registered in the police. And both Atma Singh Labana and Jasveer Singh, they were arrested. They came out on bail, and after that, that case carried on against Atma Singh Labana. But Jasveer Singh left the country. He jumped the bail, and he's in America. In the meantime, these rat victims, they complained to the Akal Takht Sahib. Now, Akal Takht is the supreme religious body of Sikhs. Like in Christian, their Pope. Same, we have this head of Akal Takht, Jathedar of Akal Takht, which is the religious head of Sikhs. And if any Sikh is acting against the interest of the community, anyone can send a complaint, and the Jathedar of Akal Takht inquire it. And if he has actually done it against the community, then he is excommunicated. In Punjabi, we call it Tankhaiya. So, Atma Singh Labana, a complaint was sent by rat victims to Jathedar. Atma Singh Labana was summoned by Jathedar. This video of Satrami Bai, which was recorded in my office, was played over there at Akal Takht, where Satrami Bai is saying that, because otherwise they had won over Satrami Bai. Satrami Bai later on said, no, Atma didn't force me. But that video was played over there, and on the basis of that, Jathedar Akal Takht declared him Tankhaiya and excommunicated him from the committee. But that did not deter Atma Singh Labana from continuing as a member of Gurdwara Committee. And that didn't deter him from contesting elections of the Gurdwara Committee again and again. And unfortunately, when he won 3 elections after that, and today also he is a member of Gurdwara Committee, in spite of being excommunicated from the community. So after that, the case carried on. I want to show you some of these first. This is the judgment of Justice Jaspal Singh, 23rd January 23rd, 1996. This is the judgment of Justice Jaspal Singh. Now, these are the media reports of 26th January. This is sorry, the date was 24th January, sorry. 24th January was the date, but was arrested and produced on 24th January. So, this is the newspaper of 25th January, which shows the Bhagat in the police custody. So, these are other media reports, which also shows Bhagat is taken to hospital. Bhagat, he claims that he has this. These are even this was a huge, there was a huge coverage in the press as far as this, because this is the first time that a leader of the stature of Bhagat, a minister, was arrested. And this, even the foreign agencies also carried this news, this of Bhagat's arrest. And here is also another news. So all the newspaper, every newspaper almost covered it. Then this complaint to Akal Takht, this is a Punjabi newspaper. This is a complaint which was sent to the Akal Takht against Atma Singh Labana, and this is also Darshan Kaur also complained to Akal Takht. So these are the newspaper cuttings as far as that is concerned. Then Darshan Kaur stood by her statement. So this case carried on, and ultimately this during the hearing, then I used to go on every hearing of the case. Bhagat was also there. On some occasions, Bhagat was there in the accused box. Katara jo wahan bana hota, he was there, and then we had filed an application for the cancellation of bail. And I argued that this is a person who is a killer. This is the person, he claims himself to be the leader. He is not the leader. He is the killer. He led this massacre against the Sikhs, and he deserved to be in the jail, and send him to jail. When he was there in the witness box, and I pointed it out to him, some of the Sikhs who were there in the courtroom, they say, today, so this the way it was to be seen, Bhagat was looking like this, and he didn't even raise his head.
So this humiliation, a person who used to consider himself king of Delhi, he was uncrowned king of Delhi. In 1980s, nothing used to happen in Delhi without the permission of Bhagat. He was so powerful. Today, even the chief minister and the home minister together are not as that powerful as HKL Bhagat was during 1980s. This era of 1985 to 89. He was very powerful. This humiliation he could not accept. Ultimately, he became mentally disturbed. And the case carried on. Then uh, this final arguments were heard by Judge Manju Goyal. She acquitted Bhagat on the ground there is a contradiction between the statement of Satrami Bai and Darshan Kaur. She acquitted Bhagat. We filed appeal against it. During that appeal, the report was filed by the police that Bhagat is mentally disturbed. He is suffering from dementia. And on that, because of that, the Delhi High Court awaited the appeal. That since the proceeding cannot continue against a person who is not mentally sound. And similarly, like I mentioned in the other episode also, the other case also of Harminder Kaur, which was closed by Delhi police during the VP Singh government. We got that case reopened, and the CBI, that time Lieutenant Governor was Vijay Kapoor. Vijay Kapoor sought the opinion of Additional Solicitor General. Additional Solicitor General gave the opinion that this case has been wrongly closed and they should be reopened and reinvestigated. So the Vijay Kapoor Lieutenant Governor directed that this case be transferred to CBI, and CBI was carrying investigation. And one day, a DSP of the CBI came to me. He said, "What investigation can we carry? This person doesn't know anything. He is uh, totally mentally disturbed." So after a few years, Bhagat passed away. We are now joined by Ms. Darshan Kaur, one of the survivors of the 84 violence and one of the main witnesses against Congress leader HKL Bhagat. थैंक यू दर्शन जी कि आपने अपना टाइम दिया है आज हमारे लिए जी माफ कीजिएगा कि मैं जानती हूँ कि आपने इतने बार अपनी कहानी को दोहराया है जी बट इस वीडियो सीरीज का हमारा यही कोशिश है कि जी, जो जी। कुछ भी हुआ उसकी जो याददाश्त है वो बनी रहे जी, तो जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना टाइम हमें दिया है शुक्रिया। जी शुरुआत में मैं बस यही पूछना चाहती थी अदालत से जो समन्स आए थे मैम वो आपको कब आए 96 में आए थे मेरे अच्छा को। मैम हाँ, फिर वो जो सम्मान आए थे मैं तिलक विहार में लेके चली गई, मैंने सबको दिखाए भाई मेरे को ये वो कहते कि आपको सम्मान आए हैं तो ये, और हमने कमेटी बना के रखी है कि लेडीज अकेली नहीं जाएगी और आपको कोई ना कोई साथ में लेके जाएगा कोर्ट में। तो मैंने कहा ठीक है। फिर एक आत्मा सिंह था, आत्मा सिंह लबाड़ा था, तो उनको वो मेंबर था कोई गुरुद्वारे का, तो उनको दे रखा था भाई जितनी भी लेडीज है आप लेके, आप पढ़े लिखे हो, इनको लेके कोर्ट में जाओगे और बयान दिला के सीधा घर लेके आओगे, जहां जहां इनका घर है वहीं छोड़ोगे आप। तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर वो मेरे को कोर्ट में ले गए, कोर्ट में ले गए तो वो ढींगरा थे, ढींगरा। उन्होंने मेरे अच्छे से बयान मेरे दर्ज किए उन्होंने। ये करकरदुमा कोर्ट था हाँ, कड़कड़डुमा कोर्ट। तो उन्होंने मेरे बयान दर्ज किए, फिर मैं बयान देने लग गई जब तब, तो फिर बयान देने लग गई तो फिर मैं फिर घर पे आ गई, बयान दे के घर पे आ गई। तो फिर एक दिन मैं जब इधर टिकोर गार्डन से मैं घर पे आ रही थी तो मेरे ऊपर वो एक वो वैन होती है ना, मारुति वैन, उसमें 2-4 मतलब आदमी बैठे हुए थे। तो जैसे मैं ऐसे खड़ी हुई थी ना, मैंने कहा चलो इधर से रिक्शा पकड़ लेती हूँ घर जाने के लिए। तो वो मेरा बैग था ऐसे, तो वो मेरे बैग ऐसे खोसने लग गए, तो वो मेरे को ऐसे बुलाने लगे थे। तो मैंने बोला मैं क्या रास्ता वास्ता पूछेंगे, पता नहीं, मेरे को वैसे कुछ भी नहीं पता था भाई ये क्या करेंगे। मैंने कहा हाँ भाई साहब जी बोलो, रास्ता पूछना है। तो वो मेरे बैग ऐसे पकड़ने लगे ना, तो मैं ऐसे हो गई, पीछे हो गई। जैसे मैं पीछे हो गई ना, तो वो उतर के मेरे को पकड़ने लगे, मैं चीखे मारने लग गई। इतनी देर में काफी सारे लोग आ गए, रिक्शे वाले, उत्से वाले, सारे लोग आ गए। फिर वो गाड़ी को लेके भाग गए, मतलब मेरे को इतने जोर का धक्का दिया, मैं गिर गई थी इतने तेज। ये अदालत में जब आपने बयान दिए उसके बाद में, कितने दिन बाद हुआ ये उसके मेरे को महीना के बाद, 1 महीने बाद में। उसके बाद में फिर मैं जब गिर गई तो फिर मैंने आके फिर घर पे सबको बताया,
मैं फिर तिलक विहार पे भी गई रोती रोती, भाई मेरे को ऐसे ऐसे पता नहीं अब मेरे को क्यों किसी ने छेड़ा या किसी ने मारने की कोशिश की, ये मेरे को नहीं पता कि मैं इतने मैं सालों से रह रही हूँ या कुछ हूँ, तो आज तक मेरे साथ ये पहला चांस हुआ है, भाई मतलब क्यों हुआ मेरे साथ में ऐसा। तो उन्होंने बोला भाई ऐसे हो सकता है कि भाई आपने बयान दिए हों या कुछ हो, तो इसके कारण उन्होंने फिर पंचायत बुलाई, फिर गुरुद्वारे में मेरे को बुलाया, भाई कैसे कैसे हुआ, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे हुआ। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, ऐसे ऐसे। फिर थोड़े दिनों के बाद मेरे दूसरे सम्मन आ गए, फिर मैं दूसरी बार गई, दूसरी बार भी गई तो वहां पे इतना बहुत सारा मीडिया था, कमरा पूरा भरा हुआ था, कमरा पूरा भरा हुआ था। तो मेरे को फिर मेरे बयान हो गए थे, तो मेरे को ढींगड़ा ने बोला यहाँ से नहीं निकलना, आपने पीछे से निकालो। तो मेरे को जहाँ मीडिया था वहां से नहीं निकाला, मेरे को पीछे की तरफ से निकाला उन्होंने। अच्छा जब भी मेरी तारीख होए ना, तो एक दो या एक सरदार वो आके देख जाए मेरे को, भाई ये कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। मतलब कहीं से मैं उनको जानती भी नहीं थी, मतलब दो सरदार होके ना, मतलब इतने अच्छे बन ठन के सेंट वेंट लगा के, और यहाँ पे बाहर दरवाजे के आगे वैसे चक्कर काटते रहते थे। तो मैं बोलती थी, मैं कि हाँ जी वीर जी कितने जाना है, कि किधर कार पूछना है, कि नहीं जी भैन जी तुझे कोर्ट जा रहे हो, मैं कि हाँ जी मैं जा रही हूँ कोर्ट। अच्छा अच्छा कोई नहीं असी भी थोड़े नाल चलांगे, मेरे को ऐसे बोलते थे हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तो मैं समझती ही नहीं थी, मैंने ये समझा मैं कि चलो ये भी है, ये भी मेरे साथ में है। सरदार होके भी ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ में, दगा करने लग गए। अच्छा मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं क्या चलना, मैं क्या मैं तो जा रही हूँ, मैं क्या। फिर मेरे मेरे साथ में तिलक विहार की लेडीज से भी जाती थी, कुछ बुढ़ी थी, कुछ जवाने थी, बुजुर्ग भी थे, जेंट्स भी थे, लेडीज भी थे। मेरा एक एक टूटा पज्जा वीर जी थे, एक फुल्का साहब, और एक सरकारी वकील मिला हुआ था, और उसके 25-30 वकील हुआ करते थे, वो मेरे को दबाने की कोशिश करें। किसके 25-30 वकील हुआ करते? एचकेएल भगत के जी। उसके कितने वकील हुआ करते थे, मेरे को घेर के खड़े हो जाते थे। मैंने कहा जितना मर्जी घेर लो, जो मेरे साथ सच्चाई हुई है मैं वो ही बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं क्या जो मेरे साथ सच्चाई है मैं वो करूंगी। तो इतने सारे वकील थे, वो मेरे को उल्टे सीधे वकील, मेरे को फिर वो कहते थे ये अपने आप को अनपढ़ औरत समझती है, वेरी स्मार्ट मेरे को ये बोलते थे। मैं क्या वेरी स्मार्ट अपने पास रखो, जो मेरे साथ आप बीती हुई है मैं वो बता रही हूँ। आप मैंने 12 बंदे मरे, मैं क्या वापस ला के दे सकते हो? जो औरतों की मैं क्या बेदबी करी है, वो क्या वापस औरतों की इज्जत को खराब करी है, बेदबी करी है, वो वापस ला के दे सकते हो आप? है तो मैंने कहा जो गुरु ग्रंथ साहब होता है हमारा गुरुद्वारे का, उसको ले जाके और नीचे उसको फाड़ फूड़ के नीचे रखा उन्होंने, और ऐसे ऐसे पैर से जूतों से उसको कुचला, उसके ऊपर पेशाब कर रहे हैं, उसको ऐसे थुड्डे थुड्डे मार रहे। ये किसने किया? यही लोग थे त्रिलोकपुरी में 84 के टाइम? 84 के दंगों में 84 के टाइम पे इन्होंने ऐसे ही किया। बिल्कुल भी उनकी, चलो आदमियों की तो करी के करी, भगवान को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। जो आपने कोर्ट में बयान दिया था, हाँ ये जो इसके बाद जो धमकाने की कोशिश वगैरह की गई, हाँ। आपने कोर्ट के बयान में क्या कहा था? मैंने कोर्ट में फिर मेरे को फिर ये फिर हमले होने लग गए। फिर मैं कोर्ट में गई थी, कोर्ट में गई तो फिर माता सुंदरी वहां से आ रहे थे, हमने माता सुंदरी गुरुद्वारे में फिर हमने लंगर वंगर खाया, काफी लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे वो हमारे साथ में। जैसे वहां पे ना वो गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के मठारू थे, और 10-12 कोई सरदार थे, उनके हाथ में लाठी डंडे थे। तो अंदर थी मैं, जैसे ये वो काला शीशा था ना, मैं उनको दिखाई दे रही थी, ये मेरे को दिखे ही नहीं। जैसे मैंने ऐसे दरवाजा खोला ना, इन्होंने मेरे पर लाठी लूटी बरसाना शुरू कर दिया। यहाँ लगा, पीछे लगा, इधर लगा, मेरे नाक में मुंह में सारे में खून निकल आया। जैसे मेरे को डंडे वंडे मारे ना इन्होंने, वो गमले, मेरे को इतना पता है कि ये गमले पड़े हैं, फिर गमलों के ऊपर मैं ऐसे मतलब गिर गई मैं गमलों के ऊपर, मेरे को पता ही नहीं, फिर होश ही नहीं मेरे को। ये किस दिन हुआ? ये जब बयान दे के हम उस दिन आ रहे थे। और ये हमले क्यों हुए? आपने अपने बयान में ऐसा क्या कहा था? मैंने बयान में कहा था भाई वहां पे एचकेएल भगत है, वो कहते कि आप आएगा तो पहचान लोगे, मैंने कहा हाँ मैं पहचान लूंगी। तो वो कहते कि कैसा लगता है, मैंने कहा काला चश्मा पहना हुआ था और सफेद वाइट कपड़े पहने हुए थे, क्रीम कलर की गाड़ी में आया था, और मैं कहा थोड़ा गिट्ठा लगता है, मैंने ये बोला था।
बस उसके बाद में फिर मेरे को फिर इरविन हॉस्पिटल में उठा के ले गए। फिर वहां पे मेरे को 8 दिन आईसीयू में रखा, 8 दिन 10 दिन फिर मेरे को आईसीयू में रखा वहां पे। फिर मेरे को यहाँ से चोट लगी, काफी मेरा एमआरआई हुआ, फिर एक्सरे हुए, काफी मेरे इसमें नाक में इसमें खून निकला, नाक मेरी इतनी मोटी सूज गई, फिर नाक भी मेरे को मतलब मेरे साथ बहुत हमले हुए हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने वेद भी करी मेरे ये साथ। वाला जो हमला हुआ कोर्ट में, जब आपने पहली बार बयान दी थी, तीसरी बार तीसरी बार, तीसरी इसी बार के मेरे बाद। हाँ तीसरी बार इन्होंने मेरे को डंडे से मारा। आप हर बयान में एचकेएल भगत के बारे में हाँ आपने बारे में बयान दिया बोलती थी, था, हाँ हर तारीख हाँ में। हाँ हाँ हाँ। जब वो लास्ट में जब वो जिस दिन पहचानना था इसको, एचकेएल भगत को, एचकेएल भगत को पहचानना था, तो ये कम से कम 25 बंदों को इकट्ठा करके लेके आए। सबको काला चश्मा पहना हुआ और व्हाइट कलर के कपड़े पहनाए हुए, और ऐसे जो जो कट वो होता है ना, कटघरा जो खड़े होने का, उसमें नहीं, उसके आसपास इतने घेरा लगा के खड़े हो गए। कहाँ? वो कोर्ट में ही, ढिंगड़ा के पास। और मैं तो वैसे बैठी हुई थी। फिर मेरे को ढिंगड़ा ने बुलाया, अभी दर्शन कौर भाई आ जाओ आप। मैं फिर गई। कहते आपको एचकेएल भगत को कहाँ देखा? मैंने कहा मैंने लड़ाई में देखा सर। तो तभी मैं जाती थी ना कोर्ट में, तो मेरे को एक बात वो ढिंगरा ने समझाई हुई थी कि आप मुंह खोल के कभी नहीं आना, मुंह ढक के ही आना। आपने मुंह ढक के जाती थी तो भी मेरे ऊपर इतने हमले होने लग गए, मुंह खोल के जाती तो कितना मेरे को वैसे ही मार देते। मुंह ढक के जाती थी तो इतने हमले हो गए मेरे ऊपर। तो फिर वहां जाके तो मेरे को खोलना पड़ता था, ऐसे ऐसे करके मैं बयान देती थी, खोलती भी नहीं थी पूरा, ऐसे इसको ढक के ऐसे सारा पूरा तब बयान देती थी मैं। तो फिर मेरे को बोलने लगे ढिंगड़ा के, वो देखो आप कोर्ट में देखो कहाँ है, आज आया हुआ है वो यहाँ पे। तो मैं उठ गई वहां से। फिर मैंने ऐसे देखा, नजर मारा तो कितने ही सारे जने खड़े हुए, काला चश्मा पहन के और सफेद व्हाइट कपड़े, पजामा पहने हुए, मैंने लंबे लंबे से। मैं भी घबरा गई, मैंने कहा इसमें तो है ही नहीं आज के, इतने सारे बंदे क्यों कैसे लेके आ गई है। अच्छा, मैंने सारे में देखा देखा देखा, फिर मैंने ढिंगड़ा को बोला, मैंने कहा नहीं सर, आज इसमें तो नहीं है। तो बोलने लगे अच्छा बैठ जाइए आप। फिर मैं बैठ गई जाके कुर्सी पे पीछे। फिर बोलने लगे कि आप अच्छी तरीके से देखो, आप मेरे को ये बोलने लगे कि आप अच्छी तरीके से देखो, इसमें है दर्शन कौर, घबराना नहीं, डरना नहीं है आपने, और आप अच्छे खड़े हो जाओ, मेरे को बोलने लगे। फिर मैं खड़ी हो गई। आप अच्छी तरीके से देखिए, इसमें है, और घबराओ बिल्कुल नहीं घबराना। ये नहीं सोचो कि भाई मैं अकेली हूं यहाँ पे कोर्ट में, हम आपके साथ में हैं, देखो कितनी पुलिस खड़ी हुई है आपके साथ में, और मैं आपके साथ में हूँ, ऐसे मेरे को बोलने लगे। अच्छा, फिर मैं खड़ी हो गई। फिर हमारे साथ जो सारे बैठे हुए थे, मैंने उनको बोला, मैं क्या ये दूसरे दूसरे लेके आए, मैं क्या कैसे पहचानूं, मैं क्या वो तो दूसरा था, मैं क्या जो लड़ाई में आया था, मैं क्या वहां जो त्रिलोकपुरी में मैंने देखा था। फिर मैंने खड़े होके ना, फिर मैंने ऐसे ऐसे हटाती गई तो बीच में खड़ा हुआ वो। फिर जब मैंने पहचाना ना उसको, तब तो मेरे ऊपर ज्यादा हमले होने लग गए, फिर मेरे ऊपर ज्यादा हमले होने लग गए। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में फिर एक तो मैं कोर्ट में ही जा रही थी, फिर यहाँ पे एक मैं इधर से बेटे के साथ में 3 व्हीलर में आ रही थी, 3 व्हीलर ही पलटा दिया हमारा, 3 व्हीलर ही पलटा दिया। एक टेम्पो आया, टेम्पो इतनी जोर से टक्कर मारी कि 3 व्हीलर ऐसे पलटी, खा खा के ऐसे ऐसे जाके किनारे लगा। शुक्र है नाले में नहीं गया। मेरे सारे होठ फट गए, नाक फट गया, ये हाथ वाथ सारे फट गए मेरे। मेरी बहू थी साथ में, उसको भी लग गया, मेरी बहू को लग गया, मेरे ये सारे रगड़ खा गई, सारे पूरे हाथ पैरों में, इतने में सारे में। फिर मेरे को हॉस्पिटल में लेके सारे मेरे वो गुरचरण सिंह बब्बर वगैरह, फिर ये तिलक विहार वाले सारे आ गए मेरे को देखने के लिए। फिर मेरे को हॉस्पिटल में ले गए, वहां पे भी मेरे को 1 हफ्ता रखा हुआ था। ये कब की बात है? ये तो इतना ध्यान नहीं है फिर मेरे को। ये लास्ट मेरे पर हमला था उनका, वो पहचानने के बाद उनका लास्ट हमला था। फिर उसके बाद में फिर 96 में मेरे को जब ये हमले हमले होने लग गए ना, फिर एक मैं मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम घर पे आए, और ये डीसीपी, बड़ा डीसीपी होता ना, डीसीपी आ गया घर पे, और एसएचओ आ गया, एसीपी आ गया, सारे मेरे घर पे आ गए। लेडीज इनके ऊपर हमले हो गए, लेडीज वो है ये। फिर यहाँ पे गार्ड भी लगा दी, मेरे 6 जनों की गार्ड लगा दी, और 3 पीएसओ दे दिए मेरे को, साथ में पुलिस वाले चलते थे मेरे।
जब मैं बाहर भी नहीं निकल पाती थी इतनी। अभी 2017 में मैंने हटवाई है पुलिस। और वो तो जब पुलिस से की ही लगी गार्ड हुई है, जब से ही लगी हुई थी। पुलिस की गार्ड कब लगवाई है इन्होंने पहले? इन्होंने 96 में लगी हुई थी। तो 96 से 96 2017 से 17 में हटी है। 17 में मैंने हटवाई है। डीसीपी के पास गई मैं 10-12 बारी। मैं क्या सर अब मेरे को कोई खतरा नहीं है, इतने दिनों से मैं क्या मैं जो बंदी पड़ी हूँ, मेरे को कहीं जाना ना आना, मैं क्या कहीं क्या करूँ मैं। फिर उन्होंने बोला अभी देख लो, धीरे 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 एक हटाया, दो हटाए, फिर एक पीएस, दो हटा दिए, एक हटा दिया, पहले दो दे दिए पीएसओ, फिर एक हटा दिया, फिर तो 1 महीने में 2 महीने में वो हटा दिया, फिर एक दे दिया, ऐसे करके। फिर गार्ड भी एकदम नहीं हटाई। 6 जने थे बाहर गार्ड में। ये पार्क है ना सामने, इधर बैठे रहती थी टेंट लगा के यहाँ पे। वो भी धीरे धीरे करके हटवाई मैंने सारा। फिर उसके बाद में जाके फिर अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आपके बयान देने के बाद क्या हुआ केस में? केस में फिर वो बीमार हो गया था। मैं क्या कोर्ट नहीं सजा दे रहा, लेकिन ऊपर वाले की सजा इसको जरूर मिलेगी। इसने हमारे साथ किया ना, हमारी बदुआ तो लगेगी ना। हम तो दुआएं तो देंगे नहीं ना इसको। बदुआ में क्या, चक्की का पिसा हुआ मैं क्या आटा खा लेना, लेकिन विधवा के दांत का पिसा हुआ आटा खा होता है ना, मैं क्या वो कभी मत खाना, उसकी बदुआ भी मत लेना। मैं क्या होए तो उसकी दुआ लेना, मैं क्या बदुआ मत लेना, मैं क्या कभी। मैंने ये भी बोला था कोर्ट में। और एक वकील था, वकील मेरे को जब भी जाती थी ना, मेरे को उसका एचकेएल भगत का, वो मेरे को चिढ़ाता रहता था। आप तो कहते हो मैं अनपढ़ हूँ, वेरी स्मार्ट, आप तो वो करते हो, ये करते हो, आप अनपढ़ लगते हो, आप ड्रामा करते हो। मेरे को ये बोलने लग गया। मैं क्या ड्रामा करे तेरी बीवी। मैं क्या ऐसा है, ये जैसे बुढ़िया बैठी हुई है ना, ये सारी माएँ बैठी हुई हैं जितनी भी मेरे साथ आई हैं। इनका कोई 2 बेटे थे, 2 बेटे मर गए, इनका आदमी मर गया, इनका किसी का भाई मर गया, है ना। मैं क्या आप मरोगे ना तो आपकी बीवी को मैं क्या इनके मेरे हमारे साथ आके बैठा देना। मैं क्या थोड़े दिनों के बाद, 2-3 महीने के बाद वो वकील ही खत्म, मर गया। वो वकील ही मर गया जो मेरे साथ जिद करता था। मेरे को सारे बोलने लगे तो तुमने बदवा दे दिया। अरे बदवा क्या दी मैंने, कहा मेरे हाथ में थोड़ी है मौत और मरना और धरना, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो कहने वाली बात है। इस टाइम में आपको डर नहीं लगा? नहीं, मेरे को डर नहीं लगता था। मेरे को बोलते थे कि डर लगता है आपको। मैंने कहा डर उसको लगेगा जो जिंदा बंदा है, मैं तो वैसे ही मरी पड़ी हूँ, मेरे को क्या डर है, मरे हुए को क्या डर लगता है। जी, और सरकार की तरफ से मुआवजा? मुआवजा तो हमें वो ही मिला था, 5 लाख एक मिला और 3.5 लाख एक मिला, बस। उसके बाद में कुछ भी नहीं मिला। वो कहते कि हम इनको बोलती थी कांग्रेस के हम इनको 20 लाख रुपया देंगे, इनका बकाया पैसा है, बकाया पैसा है। वो बकाया पैसा ही पता नहीं कहाँ है। हमारे बच्चों को एक एक को नौकरी दे देते। बच्चों को ना दो, जो अभी हमारे पोते बड़े हो गए हैं, पोती पोते जो पढ़ लिख के बड़े हो गए हैं, उनको दे दो नौकरी। अब आपके खानदान में कितने लोग हैं? हमारे हम 14 जने हैं। जी, कौन कौन है? मेरे 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, और बड़े वाले बेटे के 3 बच्चे हैं, और छोटे वाले के 2 बच्चे हैं, और बीच वाले के भी 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ। उनकी परवरिश में 84 का क्या असर पड़ा? नहीं को उनकी परवरिश में तो बच्चे भी बोलते हैं, बेटे भी बोलते हैं पापा को। हर एक त्योहार पे जब हम पाठ वाठ रखते हैं, जब ये शहीदों का पाठ रखते हैं गुरुद्वारे में, तिलक विहार में जाते हैं हम मत्था टेकने के लिए, और ये तो वहां देख के बड़ा सुकून भी मिलता है और रोना भी आता है कि मतलब कितने। आपने वहां गए हो, आज आप घर में गए हो? नहीं। नहीं गए ना, नहीं मैम। वहां पे आप जाके देखो। आप पे क्या असर पड़ा है इन मेरे पर पिछले बहुत 40 सालों बहुत के? बुरा असर हुआ, बहुत बुरा असर। देखो मैं तो 19 साल में तो किसी की शादी भी नहीं होती है। मैं तो 19 साल में विडो हो गई, अपने बच्चों को ही पाल पोषण में ही मैंने अपनी जिंदगी खराब बर्बाद कर दी। बच्चों को ही मैं अपने बच्चों को ही नहीं कामयाब कर सकी, मैं पढ़ा ही नहीं सकी उनको। पढ़ाती या फिर मैं अपना काम करके बच्चों को खिलाती, कैसे घर पलता मेरा, कैसे घर चलता मेरा। बच्चे पढ़ जाते हैं तो पढ़ने के लिए जाते तो घर कैसे फिर चलाते, हम क्या खाते फिर हम। बहुत दुखों का हमने देखा है, करीब से दुखों को देखा है। जी। और सरकार की तरफ से और कोई सहारा नहीं? नहीं, सरकार की तरफ से कोई सहारा नहीं है ना, कभी मिला ही नहीं है सरकार की तरफ से सहारा।
और अदालत कितनी बार जाना पड़ा, कितने सालों के बहुत लिए? बार जाना पड़ा, बहुत बार। मैं तो कहती हूँ अदालत अभी भी बुलाएगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनको सजा तो मिले, सजा तो मिले। या फिर जेल में बंद करने से उनको ये सजा नहीं है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसे जैसे अभी सज्जन कुमार को जेल में है, जेल में तो उनको सारी सुविधा मिल रही है, रोटी पानी सब कुछ, पलंग दिया हुआ है, कूलर पंखे सब कुछ है। उनको तीली लगानी चाहिए, उनको जलाना चाहिए जैसे हमारे 84 में जला दिए। कैसा लगा जब भगत जी को के केस में कुछ हो नहीं पाया? बहुत बुरा लगा, लेकिन इतनी मेरे को तसल्ली है कि वो जब अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल था ना, मेरे को पुलिस वाले आके बताते थे कि मैडम उनको ना इतने इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ गए पीछे। लेट जब वो आईसीयू में था ना, तो 8-9 महीने वो आईसीयू में रहा है, तो उनको बेड सोल हो गए थे पीछे से, उसमें कीड़े पड़ गए थे। तो मैं तो यही समझती हूँ कि कोर्ट की सजा नहीं मिली उनको, लेकिन भगवान की सजा मिली, उनको भगवान की सजा मिल गई है उनको। शुक्रिया मैम कि नहीं, आपने इतना टाइम दिया है नहीं और इतनी ऐसी मुश्किल कहानी को दोहराया है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा जो केस है ना वो आगे तक बढ़े और लोगों को भी पता चले कि इनके साथ कितना बुरा हुआ है और क्या क्या हुआ है इनको 84 में। किसी को पता है, किसी को नहीं है, लेकिन हम जब आप बीती सुनाते हैं तभी तो पता चलेगा ना, तभी जनता को भी पता चलेगा कि इन्होंने किया, इन्होंने क्या करा है हमारे साथ। जब इंदिरा गांधी मरी थी हमने थोड़ा मारी उसको, हम तो अपने घर में बैठे हुए थे, हम तो बाहर निकल के भी नहीं देखा कि इंदिरा गांधी को किसने मारा। ये जो इन्होंने काला धब्बा लगाया ना हमारे ऊपर, ये जिंदगी भर नहीं भूल सकते। लेकिन हम किस सरकार से इंसाफ मांगने के लिए जाएं तो किस सरकार के पास जाएं? कौन सी सरकार है हमारी सुनने वाली? कोई सरकार नहीं है। सिर्फ उनको वोट चाहिए और कुर्सी चाहिए, इंसाफ के लिए कोई सरकार नहीं है। मेरा बड़ा पोता जाता है, ये टकोर गार्डन में है, मेरा बेटा है ना वो टीचर है कोई, तो उनको इसको उसमें छोड़ने जाता है, सुबह 6 बजे निकल जाता है मेरा बड़ा बेटा, एक छुट्टी भी नहीं करता। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे बड़े बेटे को देख के ना मेरे को बहुत रोना आता है। उसको शुगर भी है, वो ऐसे उसके कमर में भी दर्द रहता है। मैं उसको बोलती हूँ बेटा एक छुट्टी कर ले, नहीं मम्मी नहीं, नहीं मेरे को क्या करूं मैं। उसको शुगर हो गया, छोटे वाले को शुगर हो गया। मैं अपने बच्चों को देख देख के यार अंदर घुटती रहती हूँ। मदद करने वाला हमारा कोई नहीं है, किसके पास जाए हम? कौन सी सरकार है ऐसी जो जिसको बोले जाके? अभी पोते को लगाया, उसका टीचर है ना, उसका हस्बैंड काम करता है कंप्यूटर पे। उसने बोला भाई, मेरे बेटे को बोला भाई तुम्हारे बेटे को ले आना, वो 12,000 देता है, मेरा पोता बड़ा वाला जाता है। कुछ तो होएगा भाई। लोग बाग सोचते होंगे इनके पास बहुत कुछ है, बहुत है, वो है, हमें पता है कि हमें 84 का कुछ भी नहीं मिला। 84 हुई हमारे साथ, हमें कुछ नहीं मिला। लोग बाग पता नहीं कहाँ बाहर से, गांव से, इधर उधर से आके वो बन गए हैं। वो लोग लूट लूट के खा रहे हैं तिलक विहार में, जाके देखो आप। वो बाहर तक चले गए हैं, किसी की इतनी बड़ी गाड़ी है, किसी का क्या है। हमारे घर में बाहर देखो साइकिल भी नहीं है। इस बात पे रोना आता है कि हमारा सब कुछ लुटने के बाद भी हम ऐसे ही है। हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, क्या बोलें किसी को? मजबूर है हम भी, क्या बोलें किसी को? हाँ, कोई मदद कर देता है तो हमारे दिल से ही दुआएं निकलती है, कोई नहीं करता तो हम चुप करके बैठ जाते हैं, क्या करें फिर? अफसोस है कि आपसे इतनी दुख भरी कहानी फिर से दोहराया, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने नहीं टाइम कहकर दिया।